Good morning, students. So, now welcome to our new lecture. In this particular lesson, we are going to see about the unit of work, joule, and urge, and we will also see what is positive, negative, and zero work. Although we have discussed this in the last lecture. Okay, now as we are discussing work and energy, so what is the unit of work which has to be classified very clearly? Okay, now the SI unit of work is same to that of the SI unit of energy. The unit of work and energy is same. Okay, so the SI unit of energy is joule, and energy has also the SI unit as joule. Okay, now we know work is equals to force into displacement. Okay, the unit of force is Newton and the unit of displacement is meter. So Newton into meter is nothing but joule. Okay, so this J, okay, it is nothing but joule. Okay, so 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. So if any object has been applied a force of 1 Newton and it has displaced after this application of force to a distance of 1 meter, then the work done for that particular object is 1 joule. What is it? It is 1 joule. Okay. Now it is about the SI unit. The CGS unit is, this is SI. Okay, now CGS unit is, so force is written as Dian. Okay, and obviously we know the displacement, this is going to be in centimeter. Okay, so 1 Dian into 1 centimeter is going to be 1 urge. What it is going to be? It is going to be 1 urge. Okay, so 1 Dian into 1 centimeter is 1 urge, and urge is the CGS unit and joule is the SI unit, okay, of work. Now we know that 1 Newton is equals to 1 Newton is equals to 10 raised to 5 Dian. How much it is? 1 Newton is equals to 10 raised to 5 Dian, and 1 meter is equals to 10 raised to 2 centimeter. 1 Newton is equals to 10 raised to 5 Dian and 1 meter is equals to 10 raised to 2 centimeter. So 1 joule is equals to 1 Newton to 1 meter. If I make this Newton into Dian, that is 10 raised to 5 Dian, and meter, 1 meter as 10 raised to 2 centimeter, what I am going to get? I am going to get 10 raised to 7 Dian into centimeter. And what is Dian into centimeter? 1 Dian into 1 centimeter. What is it? It is urge. So it is urge. So 1 joule is equals to 10 raised to 7 urge. This is the relation between joule and urge. So 1 joule is equals to 10 raised to 7 urge. Okay. Now we will see what is positive, negative, and zero work. Suppose this is an object which is performing a motion. Okay, now the force applied to this object is in this direction and the motion is also performed in the same direction. The displacement is also in the same direction. So if the direction of force and the displacement is same, then the force is going to be positive force. What it is going to be? It is going to be a positive force. Okay, now if
the direction of force and the displacement is in opposite direction. ओके, फोर्स लगाया जा रहा है लेफ्ट साइड से और जो मोशन हो रहा है वो राइट साइड की तरफ होगा. अगर फोर्स लेफ्ट साइड पे लगाया जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ लगाया जा रहा है और मोशन जो है, जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट साइड की तरफ होगा, मतलब क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो ऐसे केस में जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा. क्या होगा वो? नेगेटिव वर्क होगा. ओके, और अगर फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगाया जा रहा है, क्या हो रहा है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 90 डिग्री एंगल से अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हमारा वर्क क्या होगा, जीरो होगा. फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है मेरा. ओके, माई हैंड इज द सरफेस, this is the object, okay, and I am applying a force in this direction. okay, इस केस में जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं है. okay, there is no any movement whenever, but when I apply force on this direction or on this direction, there is a displacement. But when I am applying the force on a 90 degree angle, okay, at that time there is no displacement. So in this case, the work done is going to be zero. Or it is going to be? It is going to be zero. So what is positive work? When the direction of force and displacement is same, the work is positive. Okay. So and in this case, theta is going to be any number. Okay, it can be any number. So from 0 degree to anything between 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री के बीच में जो भी होगा वो थीटा होगा हमारा. ओके, सो 89.9 डिग्री सपोज कंसीडर करता हूं मैं. सो अगर थीटा 0 डिग्री है, सो वर्क क्या होता है हमारा, एफ एस कॉस थीटा होता है. ओके, कॉस थीटा अगर 0 है, सॉरी थीटा अगर 0 है तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. व्हाट इज कॉस 0? इट इज 1. सो वी गेट वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो विच इज पॉजिटिव, यहां पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो हमारा ये वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क होगा. क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क. सपोज इन द पेपर क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज द एंगल और व्हाट इज थीटा फॉर पॉजिटिव वर्क. सो पॉजिटिव वर्क के लिए आप लोग थीटा क्या ले सकते हैं, डायरेक्टली 0 भी ले सकते हैं. ओके, देन नेगेटिव वर्क क्या होगा, अगर थीटा 180 डिग्री है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हमें मालूम है एफ एस कॉस थीटा. सो कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 डिग्री इज -1, सो इट विल बिकम माइनस एफ एस. सो ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव वर्क होगा. क्या हो गया ये हमारा, नेगेटिव वर्क हो गया. और जब हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब थीटा क्या होगा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो cos 90 डिग्री क्या है, व्हाट इज cos 90 डिग्री, इट इज cos 90 डिग्री क्या है, 0 है. cos 90 डिग्री क्या है, 0. सो W इज इक्वल्स टू एफ एस इंटू cos 90 डिग्री. सो विच इज एफ एस इंटू 0, देयरफॉर वर्क इज इक्वल्स टू 0. सो इन दिस केस the work done is 0, which is called as zero work. It is called as zero work. Okay, so this is about positive, negative and zero work. Okay, thank you.